that connection, this is the second webinar. The first webinar we had on the last Sunday, in which two tribals were there to make their own presentation. So I am thankful to, that Dr. Ghulam Razdan ji has very kindly agreed to address today's webinar, and Dr. Rupendra Kavi, who is an anthropologist. यहाँ पे Uh, मैसेज and आ रहा है, कैन यू हियर मी? Thank sir. yes, I can hear you. I can hear you. Dr. प्लीज ऐड मी ना. You have already added. We can see your face and we can hear you also. So Rupendra Kaviji is there with the Chhattisgarh government for tribal development, and we have a very renowned professor Kavita Sharma. She is say from English literature, but she has a interest in हेलो, our programs. Yes, कैन यू हियर मी? yes, I can hear you. And I am also very much thankful to the media, electronic media and print media who are watching and telecasting our programs. We are also thankful to the other viewers who are with us in this program, कैन यू हियर मी? and मेरी they आवाज can आ रही है? question after the uh, conclusion of the webinar. They are free to ask questions, and we will try to give answers to them. So we are very much thankful to them, and we will begin with Professor Kavita Sharma. Professor Kavita Sharma ji, we will begin with your discussion. बट कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. They are telling us no. ऑलराइट. Because We I all are can't get hearing it you. on my computer. I'm only working on my That's phone now. okay, okay. But we can see you and we can hear you. All right. So Thank now you so much. I am Thank requesting you. you Thank you. Let me to try. Let me try my best with this handicap. But anyway, okay. whatever I can say, I will say. Please, So please thank say you we for are. having me here. Yes. And now we are talking about PM Awas Yojana. Now, Yes. why should you have a PM Awas Yojana? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, why should you have a PM Awas Yojana? And that is because we lack affordable housing. We lack Yes. affordable housing. And what is the definition of affordable housing? The definition of affordable housing is that it must have a carpet area up to 90 square meters in non-metropolitan towns, and in metropolitan towns it must be about 60 square meters, and the value should be up to 45 lakhs. Now, I don't think the definition will hold good for most people. Now, affordable housing was first launched in 2007. It was known as the National Urban Housing and Habitat Policy, and it became prominent after 2008 because of the global financial crisis, which was triggered by the US and the burst of their housing bubble. So and so then in the demand increased, and because of economic slowdown, people could not buy houses, and real estate developers started to develop on affordable housing. But the biggest boost that has come is by the government of India Pradhan Mantri Awas Yojana. This was launched in June 2015. At that time, the housing shortage in India was about 2 crore units. So, this is according to the technical group of the Ministry of Housing and Urban Development, which did a survey in 2012. And most of the shortage was among economically weaker sections, the lower income groups, and the mid income groups.
A rapid pace of urbanization led to a further increase in the affordable housing segment. Uh, Now, why is there so much of affordable housing, a problem with affordable housing? One is its rapid urbanization. I mean, even if you look around you, whatever is classified even as a village is not really a village, it is a mid level town. There is also the rising land prices, which makes it impossible for people to buy a place and to construct it. There has been, although the PM Awas Yojana is there, but over the years there is a limited government intervention because of the many challenges that there are there, which we will come to. Now, what happens is that people come to towns and then they build slums and they have overcrowding there, they have disease there, they have very unsanitary and unhealthy living conditions. And so the cycle of poverty continues. So the key aspects are that there's a gap between demand and supply for low cost housing. Now, I hope I can manage that like this now. Anyway, as I said, there's a rapid increase of property prices because of increase in land prices, urbanization, migration. In fact, when I was preparing for this study, I was reminded of my father going to post-war London and in the middle of the World War and studying there. And there, houses you were sold according, or rather rented according to beds. So if there were two beds, then four people took it. Two people did night duty. They came and slept in the daytime, and two people did day work. This and that's how they managed among themselves. So urbanization and migration and low economic conditions always lead to this. And all this, as I said, impacts on the well-being of people, sanitation, hygiene, health issues. And there are many stalled projects. Why are projects stalled? Because of various issues. One is bureaucratization. Our laws are and our rules are so convoluted and bureaucratic that it further shrinks the supply of housing. And then wealth concentration in real estate is there, and so very large portion of household incomes, even those who do manage to get a house, about 45 to 50%, the statistics say, goes into paying the EMI payments. So very little is left for others. And now there are reports, there is a property equity report which says that between 20 to 22 and 24, there will be a decline in available units for low affordable housing. And uh, so this is getting further aggravated instead of getting solved in spite of the best efforts of the government. We just can't blame the government for everything. There are many, many multiple factors. By 2030, it is said that the low cost affordable units, the shortage will be 3 crore 12 lakh units, and especially Mumbai and Delhi, where most of the migration takes place, the mid income housing and low affordable income housing is the lowest supply is in these places. And so the number of households in the informal sector are between 26 to 37 million, or 2 crore 60 lakhs to 3 crore 70 lakhs. And these people, since they don't have jobs, regular jobs, they get even more vulnerable to lack of housing facilities. Many as we know that PMA, G has been the Pravas Awas Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, is there in for rural areas, it is there for urban areas, and uh, there are some reservations that have been made in it, especially for SC and ST, which form 60% of the households, which need affordable housing. Then you have the Dharti Aba Tribal Village Utkarsh Abhiyan.
which is named after Birsa Munda, the tribal fighter of independence, and it covers 63,843 villages. It is supposed to benefit about 5 crore people. Then 5% is a reservation for disabled beneficiaries, 5% people who are affected by natural disasters, example, cyclones, etc. 15% is for minority households, and there is really no specific provision for transgender, but it has been said that within all these categories, preference should be given to transgender people. Now, what are the challenges? The challenges, as I said, one is that the low cost, there is a very little availability of low cost land in suitable areas. Land is available outside the areas where people want to go. Then there's a lengthy approval process which leads to multiple clearances, which is true for anything that we do. The high degree of bureaucratization leads everyone to on a downhill slope. There is lack of access to cheap credit and construction finance. There is also for developers, they are not interested because the profit margin is very low. If they have a high profit margin, obviously it will not be affordable housing. And therefore, there is very limited participation of really large and organized real estate developers. Also, it has failed to gather momentum, this affordable housing schemes, because uh, while we say India is a very fast growing economy and all of that, but the actual income of people, in my opinion, is probably less than what is put down as figures in various documents. So, probably further government incentives are needed. Of course, the problem with all of this is that government incentives are needed in every sphere of our lives and activities. As I said, India may be the fastest growing economy, but actually it has very low employment. I think we've had a webinar on that subject earlier, that the very low employment leads to adverse sentiment of buying. Then there's challenges of implementation of government of India policies. While the policies are all there, even if you manage to pass through the rules, the implementation is very, very poor. And which is again true of every sphere of our lives in which the bureaucracy is involved. There's a difficulty of credit availability, and especially, I mean, the banking availability, the process is very convoluted, and the number of documents you require, I don't think anyone in India in this segment actually has all of them. And the non-banking financial company liquidity is very little, and also there could be much higher uh, interest rates that cannot be met by people. And so therefore the people who need housing, they rather rent than buy, than purchase. And the COVID outbreak has added to the whole problem. uh, the availability of construction labor went down and people went back to villages. Actually, personally, I am very happy about it, because when people went back to the villages, urban people realized their value, and I think the villages might pick up because of their skills. Um, anyway, because of no lack of availability of construction labor, there are delays in construction. And also now banking is tightening up norms, so it has all led to a muted demand. And that is why, I don't know about any other place, but in Delhi I see towers after towers that are lying empty and there is no one to occupy them. Now, uh, many schemes have been launched. In 2019, we had the Swami scheme, which is special window for affordable and mid-level, mid-income housing. But this was supposed to address the issue of stalled projects. And especially in Mumbai, there were 2,000 stalled projects, but everybody had to be, I mean, this was supposed to bring about transformation, and so that the projects took off. Policy reforms are required because you need areas of land use and planning regulations. Rent control policies have to be modified because people will not rent
I know that there has been a modification in the Rent Control Act. Even so, because of the difficulty in getting people to clear out of the property, you require a lot of problems, and I can see why, because the person renting also doesn't know where to go. There has to be improved supply of innovative construction technology. Right now, if you come to Delhi, we are all dying of asthma because of so much construction going on. So you need to have rapid construction and better technology for the construction. You need to also have financial inclusion, and also hire purchase. I don't see hire purchase, which is so popular in the West, taking place here. Also, community engagement. We cannot just do a top down approach, because we have to involve the community, and only then will they occupy the houses that are being built. Uh, and the income disparities among people also prevent affordable housing, because it's much easier to sell to higher income people than to the lower income people. Also, like Singapore, one should have actually mixed housing projects, where some percentage, actually now there is a scheme for it. I'm involved with the DCM company, and they have gone launched a scheme where 35% of the housing has to be for low income. But the problem is that the real estate value goes down, because the high income does not want to live with low income people. So all these are societal issues which have to be looked at. Now, what is the way forward? The way forward is, it has to be a multi-pronged approach. You have to cover the demand supply issues. You have to also give him more improved subsidies, and have infrastructure around. Because what happens is, you make houses in the middle of nowhere. How can people go and live there? There is no approachable road, there is no connecting road, there are no schools, no nothing. Then how can you go and live in a place like that? So very often even the electricity supply is not properly there. So better infrastructure facilities around. Uh, since the margins have to be low, you have to boost up the construction, and also it needs a mature rental market. You need to have a robust rental scheme, by which the balance of the interest of the landlord and the tenant are both balanced. So it has to be a more holistic approach to the whole thing. The reverse migration has led to an increased demand in tier 2 and tier 3 cities, and so that also has to be looked at, not just the metropolitan cities. And many central initiatives have been given, like affordable housing partnerships, and all these. I mean, one can go on with schemes, there's so many schemes, but there are many in difficulties, and main is implementation challenges. And you people don't see it from the point of view of the renter. It's not a file that can be just moved. You have to see how that person will actually live there. I remember in US, the project housing, when towers were built, where a certain number of units were left for project people who are living in projects, there were a lot of difficulties, but they have to be overcome. They have to be learned to live together. Also, timely completion of projects. That is such a huge problem, because people spend money, they give a down payment, and then there's nowhere, the unit is nowhere inside. The capital costs have to be adequately considered, because the beneficiary just doesn't pay for the house, has to also pay for other things before that person can make it livable for himself. So therefore, that whole package has to be considered. uh, and it is found that the states and the union territories have only 50% completion rates. So we need to therefore understand why these places are lying vacant with a truth and integrity. Unless we understand that with truth and integrity, and not just try to put targets on the file, um, things will not improve, and the crisis will just go on increasing. So also the states take a very long time in framing their own policies. That is where our politics creeps in. Who's in the center, who's in the states,
and then after that, within themselves, who's getting more prominence, who's getting less prominence. So roti, kapda, makan, these are the three basic things for everyone, for every citizen, that has to be provided for. Makan is what we are talking about now, and there are increasing number of people who are not able to afford housing. At the same time, paradoxically, there are increasing number of units lying vacant, so they have to be put together so that this crisis abates. Now, apparently, there is some additional survey, because this Awas Yojana has been extended up to 2029, and that's a mobile app. So, for people who don't know, I may as well tell you that this is a mobile app called Awas Plus 2024. And if you download that, you can do your self survey also, and there are others. You have uh, assisted pre surveys also by pre assisted surveyors. So this was launched in September 2024, became operational by December 2024. So those who want to make use of it might make use of it. But like all things, I'm sorry to say this, like all things government, things require a better implementation and a greater integrity of purpose than is there right now. Thank you. Thank you, Professor Sartaji. You have made a good presentation. Now I will request Dr. Rupendra Kavi to present his views about the housing. I will just suggest you one thing, that in 1950 also the housing for the tribals were made, but that failed. That failed. Yeah. We spent a lot of money, but not even a single tribe went to live there. So we want, that's why we are discussing here, that what should be the uh, shape, what kind of map should be there for constructing house for the tribals. That is, and since you are working on the tribals of You know, Chhattisgarh, Narayan I think Sahab, it we is, all know what should be done. The problem is we yes, don't do it. yeah, that's the problem. You are right. So now, please share your experience of Chhattisgarh with us. Rupendra Kaviji. सर हाँ, सभी को नमस्कार। सर जैसे मैडम ने भी बहुत अच्छी सारे अपने चीज़ों को रखा, और जैसे अभी इस सेशन में हम जो बात कर रहे हैं उसमें मैं छत्तीसगढ़ के प्रिमिटिव ट्राइब्स के बीच में हाउसिंग पैटर्न और उसके संबंधित सारी चीज़ों को अपने अनुभव के आधार पर रखने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी सर ने कहा, मैं अभी ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक अनुसंधान अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। तो लगातार मैं कई साल से क्षेत्र कार्य के दौरान जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनके बीच जा रहा हूँ। तो जैसे आप सब जान रहे हैं कि 75 में से 5 जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं वो छत्तीसगढ़ में हैं, जिसमें कि अबुझ माड़िया जो कि बस्तर क्षेत्र में है, और बैगा ट्राइब्स है, बैगा पीवीटीजी के बाद एक पहाड़ी कोरवा है, कमार है और बिरहोर। ये 5 जो अति पिछड़ी जनजातियां पीवीटीजी छत्तीसगढ़ में हैं। और बाकी जगहों की तरह यहाँ भी उनके हाउस पैटर्न को लेकर यदि अपन बात करें, और जो शासकीय योजनाओं के माध्यम से उनको जो सहयोग मिल रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि पहली बात तो वो खुद अप्रोच कर नहीं पाते हैं, और जहाँ वो अप्रोच करते हैं किसी के माध्यम से वो योजना वहाँ तक पहुँचता है, उनको यदि आवास मिलता भी है तो उनके लिए उतना उपयोगी नहीं होता जितना कि होना चाहिए। वो इस तरह से कि जो मकान दिए जा रहे हैं, जैसे उनको पक्का मकान दिए जा रहे हैं, उसमें कंक्रीट, छड़, गिट्टी आदि वाले जो मकान बन रहे हैं,
उसमें वो बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करते। ये मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है, और उनसे जैसे मेरी कई बार इस संबंध में जो बातें हुई है शोध के दौरान, मैंने कई जगह मेंशन भी किया इसको। तो वो चाहते हैं कि उनका जो आवास है वो उनके तरह का आवास हो। ये चीज जैसे मैंने अबुझमाड़िया में भी काम करते समय देखा। अबुझमाड़िया जनजाति में जब मैं शोधरत था तो उस समय देखा कि उनके जो हाउस पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पे वो अपने आसपास के जो झाड़ कंकड़ हैं और मड हाउस हैं, मिट्टी के दीवारों से बनाए हैं, तो उसी तरह के आवासी वो चाहते हैं। जबकि सरकार की मंशा तो अच्छी है कि उनको एक पक्का आवास दे ताकि वो स्थायी रहे और सस्टेन रहे, पर उनके लिए वो यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मकान तो बन जा रहा है पर वो घर नहीं बन पा रहा है, वहां वो रह नहीं रहे हैं। और नहीं रहने के पीछे कारण वही है कि वो लाभ लेना है, सरकार ने कहा है इसलिए बनवा लेते हैं, पर उसमें रहना है ये नहीं हो पाता है। क्योंकि उनका जो पर्यावरणिक स्थिति है, उनका जो सांस्कृतिक परिवेश है, वो उनको अलाउ नहीं करता है। वो शुरू से उसमें रहे भी नहीं है और आज भी उनको परिवेश ठीक नहीं लगता है। इसी तरह जैसे अपन जस्ट अपोजिट साइड में ऊपर की तरफ देखते हैं छत्तीसगढ़ के और पहाड़ी कोरबा ट्राइब में, पहाड़ी कोरबा जनरली पहाड़ियों में, और थोड़ा सा उनका जो मकान है थोड़ा सा पहाड़ियों के ढलानों में उस तरह से है, तो वहाँ पे वाइंड वगैरह को रोकने के लिए भी वो जरूरत है। तो वहाँ भी जैसे पक्का मकान यदि बना देते हैं तो पक्का मकान तो वो चाहते नहीं है। तो जब उनकी मकान बना रहे हैं तो उसमें हमको ये देखने की जरूरत है कि पत्थर वगैरह का जैसे यूज करते हैं वो छत के लिए खपरेल में, या खपरेल थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं, तो वो उन चीज़ों को हमको ध्यान देना होगा। और इसके लिए एक मेरा सुझाव है एक मानव विज्ञान के शोधार्थी के रूप में, कि जैसे बाकी नृजाति अध्ययन वगैरह हमारे आदिम जाति प्रशिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्तोरी और बाकी संस्थाओं से वैसे एक अध्ययन होना चाहिए, और उस अध्ययन में जो भी चीजें आ रही है उसके आधार पे एक इकोसिस्टम को फॉलो करते हुए उनके जो पर्यावरणिक स्थिति है, उनका जो सांस्कृतिक संवेदना जो जुड़े हुए हैं, उसका ध्यान रख के हम मकान का निर्माण करें। और वो मकान जब बनाया जाए प्लानिंग से लेकर आखिरी तक उनकी सहभागिता हो, ना कि उसे किसी ठेकेदार या दूसरे के द्वारा बनाया जाए। तो इस तरह से जब हम प्लानिंग भी करें तब भी वो हमारे साथ हों, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हो, एक आर्किटेक्चर भी हो, और साथ में जो कम्युनिटी की सहभागिता है वो अवश्य किया जाए, तो बहुत ही बेहतर उसका आउटपुट आ सकता है। ऐसा मेरा अवलोकन और अनुभव रहा है। इसी क्रम में बाकी ट्राइब्स में भी जैसे कमार है या फिर बैगा है, वहाँ भी कमोबेश यही चीजें देखी गई है। और आगे कुछ आप पूछ सकते हैं सर, तो उस पर मैं बोलूँ तो और ज्यादा अच्छा होगा। ठीक प्लीज है। नारायण। नहीं है, आपने अच्छी बातें बताई हैं जो रियल नीड है उनका। जैसा मैंने अभी अभी चर्चा किया कि 50 के दशक में भी ऐसे प्रोग्राम सरकार ने बनाया था, मकान बना दिया था बिरहोर के लिए, कोरबा के लिए, लेकिन दोनों उसमें अपने जानवर को बांधते थे, खुद नहीं जाते, सर कभी उसमें रहे नहीं। तो इसीलिए अभी जो सरकार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के हिसाब से बना रहे हैं मकान, तो इसलिए उसको हम लोग पहले चेक कर रहे हैं, हम लोग पहले उनको देख कर बता रहे हैं कि आप कैसा मकान बताइए तो बनाइए। तो वो अगर मकान बनेगा तो वो उनके उपयोग का होगा। तो अभी वैसी बिल्कुल गलती नहीं करना चाहते हैं कि हम लगा दें पैसा और फिर उस पैसे का कोई उपयोग नहीं हुआ। या सर, ठीक है, वो इसमें एक चीज आदिवासी और हैं ऐड करना वो। चाहूंगा, हाँ, एक और एक्सपीरियंस बोलिए। इसमें ऐड करना चाहूंगा सर। जैसे जो घर के साथ जो शौचालय दिया जा रहा है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण हाँ, बस्तर क्षेत्र में भी देखा और अन्य क्षेत्र में, कि उनको शौचालय तो दिए जा रहे हैं पर अभी पानी के पीने के पानियों की कई जगह समस्या है। तो वो शौचालय का उपयोग कैसे करें? मतलब पहली बात तो शौचालय का उपयोग उनको आता नहीं है। ठीक है, उसको धीरे से ट्रेंड किया जा सकता है जागरूकता अभियान के साथ, लेकिन पानी की उपलब्धता इतनी कम है तो वो कैसे करें? और दूसरा चीज, उनके पास जंगल का इतना बढ़िया वातावरण है, और मतलब वो जंगल दूर दूर तक उसको यूज कर सकते हैं, जो कि शौच
खाद में परिवर्तित होके वो मतलब पारंपरिक रूप से उसको जो सिस्टम उन लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें वो कंफर्ट है। तो फिर वहां पे इस तरह की चीजें अप्रासंगिक हो रही है, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमको। Yes, sir. हाँ हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। जैसे आप देखेंगे झारखंड में तो जो गांधी विश्वास रखने वाले और गांधी का जीवन जीने वाले कान्हा भगत हैं, और उनमें भी जो आप शौचालय की बात कर रहे हैं, जब उनका मकान बना कर उनको दिया गया तो वो नहीं रहे। वो आज भी वो है, और तो वो मकान बना हुआ है, उसमें वही अपना या तो जानवर रखते हैं, जिनके पास साइकिल है तो उसको रखते हैं। इस तरह से इसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। पैसा तो खर्च हो जाता है, लेकिन सही उपयोग नहीं हो पाता। तो सही उपयोग में क्या करना चाहिए? जैसे मैं समझता हूँ जो जितने आदिवासियों का देश में आदिवासी हैं, उनके आधार पर जो मेरा अनुभव है उसमें ये है कि वो जैसे खपड़ा के एक छत वाले मकान बनाए जाते हैं तो वो उसमें रहने को तैयार रहते हैं, बल्कि उनका अभी मकान भी जो है, जो आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति हैं, वो खपड़े का मकान ही बना कर रहते हैं। जो कुछ आईएएस आईपीएस इस तरह की नौकरी करते हैं, और वो जब रिटायर होते हैं तो अपने गांव में जब जाते हैं तो वो भी अपने गांव वाले मकान में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो उस तरह के मकान में नहीं रहना चाहते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा गैप हो जाता है, कन्फ्लिक्ट होता है कल्चर का। उसी फैमिली में उसके फादर भी अगर बनाते हैं तो उसका कोई यूज नहीं रहता है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में देते हुए हमें यह बताना है, रिकमेंड करना है कि कैसा बनाया जाए, किस क्षेत्र में किया जाए। इसलिए हम लोग जो अभी वेबिनार कर रहे हैं, इसके पहले एक जो किए थे उसमें झारखंड का था और बिहार का था। अभी जो कर रहे हैं इसमें एक तो जनरल है जो कि जैसा इन्होंने अभी कविता जी ने बताया, और एक है जो कि उसमें हेल्थ का क्या होगा। तो हमारे साथ पास वो भी एक्सपर्ट हैं और यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी हैं, तो इसलिए उनके जो अनुभव हैं वो मेरे समझ से यंगर जनरेशन के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। और आप कहाँ कभी भी हम तो आपसे और ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि आप उस तरह का कोई प्रोग्राम बनाए, या कर देख श्योर करके सर। ये बताइए कि कैसा कैसा होना चाहिए उसका जो प्रोजेक्ट है, उसका नक्शा नक्शा अगर आप बना दीजिए कि तो ऐसा होना चाहिए, करना ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम जो बिल्कुल जानते सर, हैं एक हम प्लानिंग में जितना रखूंगा आपके बात को रखते हुए। उससे, क्योंकि हम जो हम जानते क्या एक हैं उससे सवाल भी देखिए पूछ उनको सकते जो, हैं? हाँ जरूर पूछ सकते हैं, जैसे हम उसे सेंटेंस कंप्लीट कर लें इसलिए। हाँ, जरूर तो जरूर। उसमें ये है उसमें ये है कि उनका जो उनको जो घर दिया गया है उसी का दो कमरे का एक पहले शुरू में जो दिया गया इंदिरा आवास योजना, उसमें एक कमरा था, और उसके साथ चारों तरफ कुछ पेड़ उड़ लगाने का बाद में ऐड किया गया था। इतना जमीन नहीं था कि उसमें पेड़ या कोई कुछ लगा सके। तो ये वो उसका उपयोग ही नहीं होता था, और वो सोते थे तो जानवरों के साथ सोते थे, जो हेल्थ पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है। तो उसमें हम लोगों ने सुधार करवाया था उसमें। उसमें ये था कि एक कमरा और जोड़ दीजिए, दो कमरा हो जाएगा। और बाहर में जो आप टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट बना तो हम उस समय मना कर रहे थे कि कोई नहीं जाएगा, आप इसको बेकार कर दें। तो जो बन गया था सो बन गया, लेकिन उसके बाद अब जो बन रहा है छत्तीसगढ़ में भी जो बन रहा है उसमें टॉयलेट नहीं बन रहा है, क्योंकि पहले पीने की पानी तो आप उपलब्ध कराएं फिर वो होगा। और उससे क्या होता है कि उनकी पूरी संस्कृति बदल जाती है। टॉयलेट का कोई यूज भी उनको समझ में नहीं आता। वो कहिए कि वो गांधीवादी हैं अपना, जो वो गांधी जी की बात करने लगते हैं कि कहाँ टॉयलेट का ये था, अपना मिट्टी इसमें को मिट्टी थी। हाँ, एक हेल्थ पहले हाइजीन का भी एक समस्या आ जाता है सर, उसमें वो हाँ क्लीनिंग वगैरह का तो भी उनका जो पूरा प्रैक्टिस है वो अलग ढंग का है। हाँ वो हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव में सब आ जाएगा। बोलिए आप कविता जी, आप बताएं क्या कुछ नहीं, कहना मैं चाह ये रहे थे। पूछ रही थी कि ये कल्चर, ट्रेडिशन, यूज टू, ये तो एक तरफ एक बात होती है, जरूरी भी है। लेकिन फिर क्या हमको उसी तरह चलना चाहिए? हमको कोई टॉयलेट वॉयलेट बनाने की नहीं जरूरत ही नहीं है फिर? नहीं नहीं नहीं, उस जैसे तरह का चल नहीं रहा है चल वैसे सकते। चलने दीजिए। नहीं वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि दुनिया के दूसरे एक इंडिजिनस पॉपुलेशन का कमीशन है यूएनओ में और यूनेस्को में। तो वो जो कमीशन है वो धीरे धीरे इनकी आदतों को बदलकर
इनको लिंक करती है मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ। और ऐसे भी अब बहुत सारे आदिवासी दूसरे देशों में नौकरी कर रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई उनको कष्ट ना हो और वो उनकी संस्कृति और दैनिक जीवन के साथ जोड़कर मकान को बनाया जाए। तो उसमें वो ज़्यादा खुश रहते हैं। और वैसा घर बनाया भी गया है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ताना भगत है झारखंड में, तो ताना भगत का बनाया गया है, तो उसमें वो रहते हैं, उसमें बाथरूम भी है, आराम से रहते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो सब गांधी जी को मानते हैं। तो ये उनको समझा दिया हमने कि गांधी जी के पहले यूज करते थे, आप लोग भी यूज कीजिए। तो वो चल रहा है। हाँ बताइए, अब आप बताइए कवि जी। कवि जी। सर सर हाँ, उसी हाँ पे बात बोलिए। कर रहे थे सर हाँ बोलिए ना। कि जैसे मैडम ने अभी कहा, तो उसमें ये चीजें हैं कि उनको हम थोड़ा सा पहले अवेयरनेस की तरफ ध्यान दें। अवेयरनेस मतलब वो उनके पास नॉलेज नहीं है ऐसा तो हम कभी भी नहीं सोचते, है भी नहीं। सच्चाई ये है कि नॉलेज में वो कहीं भी कम नहीं है, हमारे से हम्म, बेहतर या हम जैसे ही हैं। बस ये है कि उनकी प्रैक्टिस अलग तरह की है। तो उसको हमको समझना जरूरी है कि उनका ट्रेडिशन क्या है और किस तरह से वो मतलब प्रैक्टिस करते हैं। तो जो रहने का है, तो जैसे कि वो खुला में थोड़ा सा पसंद करते हैं। जैसे सोना का है तो सामान्यतः है जो आधुनिक जीवन शैली के लोग हैं, हम लोग बंद कमरे में जैसे सोना पसंद करते हैं। लेकिन आप जैसे देखेंगे, यदि गर्मी का मौसम हो या फिर खुला अच्छी बात मौसम हो, तो जो पीवीटीज हैं वो क्या पसंद करेंगे कि वो जो बरामदा होता है उनका, जो खुला सामने का मकान होता है, उसमें सोना वो पसंद करेंगे बिल्कुल। और उसके पीछे शायद एक ही है कि उनको खुला हवा मिलता है, अपने आस पड़ोस को देखते रहते हैं, वो बातचीत करते रहते हैं। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। और हम्म, वो चूंकि छोटे घरों में जैसे रहने का भी एक प्रैक्टिस है, तो अंदर के घर उनके भंडार घर और पूजा घर के रूप में ही ज्यादा करके उपयोग में देखे जाते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले ही जैसे बैगा में गया था, तो अंदर जो सामान कुछ रखी हुई है और पूजा का जैसे उनका जो क्या कहना चाहिए, अपने पुरखों का जो पूजा करते हैं वो जगह जो है उसके लिए वो सुरक्षित है मंदिर उनका। बाकी वो हम्म, बाहर में ही सोना पसंद कर रहे हैं। यदि खाट आज के डेट में है भी तो बाहर में या फिर चटाई में, इस तरह से। तो वो चीजें उनको अच्छा भी लग रहा है और उनके जगह के अनुरूप भी है, स्थान के अनुरूप भी है। तो इस चीजों का समायोजन भी बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। सर ठीक है। मैं अपने कुछ अनुभव बड़वानी डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल एरिया के शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, अब थैंक यू प्रोफेसर कविता शर्मा जी। आपने डिटेल हाउसिंग के बारे में बताया, व्हाट प्रॉब्लम्स कम्स लोअर द इनकम हाउसेज एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स। और प्रोफेसर डॉक्टर कवि ने बताया कि ट्रैवल एरिया में क्या हाउसिंग की प्रॉब्लम कैसे दूर की जा सकती अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। आई हैव वर्कड एट रायपुर फॉर 6 years as a teaching faculty medical college. I've seen the interior there, but much more experience I have at Party Block of Padwani district. There I had one mental health program there. Actually, that was sponsored by Tata Group. In that, just we were going there and we were providing mental health services the doorstep of the patient there. And Party Block is one of the about 25 kilometers away from Badwani district. Badwani district is total tribal area. So there I have gone there. I have visited their houses. Most of the person suffering from mental illness, if they are, then I have to visit. I have seen the houses there. There was big house there. In the one house, what happens that all the animals just they were tied up on the floor, and animal that men were just one side, women on other side. They were putting their bed on the wall side. This was the there. Somewhere outside there was kitchen, and there they used to cook the food. So this was this type of houses were very common. It was about 15-20 years ago that I've seen in Barwani district. So when where the problem, few things about housing up in the tribal area. I'll say the person lies
since born, how his culture, where he's living, what culture. He likes that. He don't want to change that. But no doubt we have this is if we change their housing style, they will be changing so many things. Reason being, the after so much the development of centuries of the and culture, still they are natural. They are not. We should not say tribal. Their natural their culture is there, that is persisting from the years, and it has to be preserved. It should be respected, and we have to work according to their nature, their habitat, and what they are having. So housing, a very good that plan of providing houses to the travel area. This is very important. Reason being, it will change a lot of their living style. That it will change their housing or their health aspect also. You see, the travel area, I know that maximum maternal mortality still it is in the travel area in the Madhya Pradesh. That large number of children die because of they are not aware of the infections. Large number are occurring because they are live in the very unhygienic condition, and those so many other the waterborne diseases are also occurs because of their improper housing. So this is big initiative. We have to some way or other change their living habitat, that house, and according to as the professor Dr. Rupendra Kavi has said, and, depending on the what they think of, we should modify the houses as they think. It should be made from the not brick, maybe from clay or a mix of clay and that bricks, or so many according to them, and that will I think will be one more thing, that so many people have worked in the tribal area in Badwani districts. There, this I know some of NGOs. They are have worked there. What they did, they took a village, Gor Lilia. उसमें in that they do what they do they the people were residing that of that NGO were residing there, and they with them what they did, not they only changed their housing, they provided the sustainable development, means electrification natural that it's a solar energy system they provided in all the houses. It is a evidence. Janak Paltaji is very close to her. She is Padma Siri, and she has worked there, and I have seen personally there. So sustainable development, what they that self dependent they also made to the women there, so doing some work there. So I think if this housing is being done, and that it will change totally their living style. It will help in the that prevention of various medical disorders, diseases that they are having. I've seen that those people are very sensible. So about they are when we I worked for about a year in the that one block there. We made aware about the that mental illness, and we were going to their house and providing the treatment at the doorstep. So what happened? They stopped going to that faith healer, etc. They knew the that patients they are because of the some illness is there. So we have to provide the one thing that house best they suitable in my opinion as they need. Second is we should go for sustainable development. Not only make colony type of their houses in that solar energy system, and why not add to the that sustainable development, all development, complete development could be added, so that will be more acceptable. These are my opinion that I wanted to say, sir. Okay, thank you. You have made a good experience of मध्य प्रदेश ट्राइब. आप बहुत अच्छा अनुभव है मध्य प्रदेश ट्राइब के बारे में. और जैसा अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया तो उसके आधार पर मुझे लगता है कि हम लोग सब इस बात के लिए तैयार हैं कि उनकी जो उनके लिए जो मकान बनाया जाए वह उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो, और Yes, sir. उनको बिजली भी जो दी जाए या पीने का पानी भी हो तो वो उनकी आवश्यकता के बस अनुरूप हो.
जो वो बहुत समय से उसको उसी का प्रयोग कर रहे हैं, और कोई नया चीज़ हम उनको देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो सरकारी पैसे का, सरकार के पैसे का असफल प्रयास हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा राजदान साहब, कि आप और रुपेंद्र कवि जी जो दोनों मिलकर के कोई एक छोटा सा 4-5 पेज का रिकमेंडेशन नहीं हो रहा, अगर नहीं हो आप रहा। दे दें तो Thank you. अब सब लगे हुए हैं, कौन मेरे को एंटर करने देगा? तो हम Sir, because नहीं, I तुमको have, आना I नहीं चाहिए have था कर वापस। a lot of attachment with Raipur because I काहे को worked आए for थे तुम? 6 years and you are from Raipur. It will good यस for सर। अब me. नहीं हो रहा। See, exchange our ideas also, experiences, sir, and हाँ along सर। with this work. हाँ, नहीं जहाँ ज़रूरत होगी मैं रहूँगा, आप हमसे कभी भी फ़ोन कर सकते Sir, हैं, sir, कभी भी पूछ सकते हैं, sir. या हम अगर आप चाहें तो ऐसा एक प्रोग्राम वहाँ मध्य प्रदेश में कहीं पे कर सकते हैं। जो आप Hmm. बताए अभी कि वहाँ एक और सोसाइटी एनजीओ है जो इस पे हाँ काम सर, किया है, तो उसके साथ सस्टेनेबल बहुत बढ़िया किया उनके सर, साथ भी बहुत हम लोग बढ़िया बात काम। जी सर, एक उनके विजिट साथ भी भी कर हम लोग सकते हैं। बात कर सकते हैं। यस सर, हाँ, तो आई कैन हैव विजिट मीटिंग का विद तो हम हर। नहीं कर सकते हाँ, ना। हाँ ठीक आई है, एम, आप उसकी मीटिंग कर लीजिए, नहीं और उस आप मीटिंग में हम क्लोन लोग सच ऑन दैट आपके साथ वन वी कैन हैव कर लाइक सकते दिस हैं वी आप। कैन हैव मेरी मीटिंग। मीटिंग ही खत्म हो गई। ये कॉफी पियो अच्छे से बैठ के ये सब लोग। हम लोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत खत्म नहीं हो है। गई। आप जो डेट जो डेट को तय करेंगे उस हम्म, डेट को हम बता देंगे कि हम फ्री हैं कि नहीं है। फ्री रहेंगे तो सर फिर आप तुम्हें कहना था हम लोग ले ज़रूर जाओ उसको भाई, कर हमको लेंगे। नहीं चाहिए। ठीक है नहीं फिर। तुम नहीं, तुम तो एक बात और कहा करो, फिर तुम वापस क्यों आ गए? कहना ले जाओ, मैं भी देखती तो कैसे जाता है। इसके साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ले जाओ इसको, आप लोगों को बहुत हमको नहीं चाहिए। धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए, और आप लोग अपना अपना सजेशन दें नहीं हो तो रहा है। अच्छा रहेगा। अगर कोई कोई प्रश्न है इसमें जो व्यूअर देख रहे हैं, उनका या मीडिया का कोई प्रश्न हो तो हम लोग उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पहला है, हाउ कैन हाउसिंग इंटरवेंशन बी डिजाइन टू बी culturally appropriate and sustainable for PVTGs considering their traditional building practices? कौन आप बताएंगे? आप लोग दोनों में से कौन बताएंगे या नहीं बताएंगे इसका आंसर, तो फिर हम बोलेंगे। आई थिंक डॉक्टर कवि जी। कवि जी, सर सर। आई थिंक हाँ, एक्सपीरियंस इन अबाउट। बताइए इसका क्या आंसर दें होगा। हाउ कैन हाउसिंग हाउसिंग इंटरवेंशंस बी डिजाइन कल्चरली अप्रोप्रिएट जो है वैसा हाउसिंग का कैसे बनाएंगे? कैसे करूं? कैसे बनाएंगे उसको? मैं कब से सर जैसे आधी रात शुरू में ही मैंने करते जैसे सारा कहा दिन सर मारे कि मारे घूमते थे, उनके आज जो सुबह से बैठे हैं। अब इसका नतीजा क्या है? ट्रेडिशन है उसका ध्यान में रखते हुए हम यदि एक ने उसको बनाएं तो ये हाँ ठीक बेहतर है, वो होगा। तो उसको कैसे करेंगे, मतलब उसका ट्रेडिशन के लिए क्या वहाँ जाकर आप सर रहेंगे, बिल्कुल या उस जो उसमें उसमें जो मानव विज्ञान या फिर जो उस ट्राइबल स्टडी जो करने वाले एक्सपर्ट हैं या फिर जो एनजीओ वगैरह लगातार काम कर रहे हैं, वो हाँ, कम्युनिटी के साथ मिल के बात करके एक पैटर्न को तैयार करें और वो वो पैटर्न फॉलो करके गवर्नमेंट। आपके पास तो छत्तीसगढ़ सरकार है, आपके पास सरकार का ट्राइबल्स पे काम करने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो आपको तो इस काम को करने में आसानी होगी ना, कोई असुविधा तो नहीं होगी, क्योंकि आप तो यही कर ही रहे हैं। उसमें सर केवल उनके बिल्कुल सर। हाउसिंग वाले सेक्टर को आप करेंगे, कोई जी असुविधा होगी? नहीं होगी, बिल्कुल। मेरे समझ से तो नहीं एक्शन होना। एक्शन पोर्शन में भी काम करेंगे तो होगी सर, क्यों नहीं होगी। क्या होगी बताइएगा, पहले आप इसमें बना करके देखिए, और फिर जो आपको कठिनाई होती है तो बताइए, हम लोग फिर सर देखते हैं बिल्कुल। कि कैसे उसको कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? और भी कोई प्रश्न है? हेलो, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल livelihood and natural resources?
इसमें वही है कि उनको ट्राइबल्स को पार्टिसिपेटरी रिसर्च करना होगा, जो और उससे जो आएगा इनपुट हमारे पास, उसको ध्यान में रखते हुए हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे और देखेंगे कि जो हम किसी दो ट्राइब को लेकर वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि कितना सक्सेसफुल होते हैं। जैसे अभी हम लोग डिस्कशन जो कर रहे हैं, ये दूसरा है, फिर इसके बाद तीसरा चौथा भी हो सकता है। तीसरा तो होगा ही, तीसरा तक का है हमारे पास। अभी उसके आगे वाले को भी हम लोग कर सकते हैं। अब ये क्योंकि ये नेशनल होगा, इसलिए सभी स्टेट में नहीं किया जा सकता है, बहुत लंबा समय हो जाएगा। उसमें हम लोग कुछ स्टेट जो जहाँ ट्राइबल का पॉपुलेशन है ज़्यादा, जो उसको जिसको कंसिडर करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वैसे स्टेट में हम लोग काम करेंगे। तो आप तो कवि जी आप बता दीजिए कि कहाँ कहाँ पे इसमें होगा। तो अभी नहीं, आप देख करके सब सर इन इस पे सब बात प्रश्नों करते हैं का, सर। हाँ, इस पे अलग से बात कर लेंगे हम लोग हाँ, क्योंकि थोड़ा और वो ज़्यादा समय बना चाहिए, लेंगे। बैठ के अपन बात करेंगे। और वो पाठक आप साहब का भी जैसे लिख के यहाँ लिया, बहुत अच्छा वो दिख रहा था। हाँ, वो कर लीजिए। तो वो सर हम लोग पार्टिसिपेटरी रिसर्च का जो मेथड्स है, टेक्निक्स है, उसको बिल्कुल हम सर, लोग इसमें यूज करेंगे रिसर्च मेथड में। उसको उसको और तब उसको जाके अप्लाई करके अपन कर सकते हैं सर। अप्लाई करेंगे, उन लोगों को इन्वॉल्व करके उसकी स्ट्रेटेजीज तय करके, और जो हम श्योर। लोग यूज करेंगे उसको रिकमेंड कर देंगे गवर्नमेंट को। ये मेथड होना चाहिए। ये बात तय है कि जो आप लिखेंगे वो 100% गारंटी है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो होगा। बिल्कुल तो वो है, तो इसीलिए आप उसको करिए और फिर हम लोग आगे बात करेंगे इस पे। ठीक है। सर। ठीक है, फिर और किन्हीं का कोई और कोई सुझाव है? डॉक्टर कवी, आइडियाज आर नॉट डॉक्टर जज टाइप। I think, sir, ठीक है। that we should appreciate this initiative by government of India that they are doing. If they are changing their housing pattern, they'll change the culture, sir. Yes, definitely it The will change. tribes, Definitely tribes. it will change. That's what we we want, that there should be change should be slow and consistent so that it can be sustainable one. And we have the tribals have their own health treatment system that you know better than me. They have a good number of herbs which they use for particular diseases and which they are using. Even Hmm. in mental health case that they are using Sir, such sir. herbs, such indigenous fruit. So Mr. That's Pathak, why sir, they are. here has Mr. Pathak, S.K. Pathak has put that their health facility must be made available at their doorstep uh, available. I think we should agree about it, sir. Yes, yes, that's it. And that it is there. That's why in each state there is a tribal research institute, and even in mental health now the tribal sector is taken independently by Human Rights Commission, State Human Rights Commission, and National Human Commission. So that is already there. That ओके Mr. Pathak's things are already taken care of. If there is any specific things which he wants to say, then he should give us in uh, this program or any program. We will take it up because I can only say that government is serious for the improvement of the and their association with the nature. And we want that nature relationship with the nature must be there and it should be encouraged. The tribals medicines and health should be popularized. It will economically help them. The poor tribals will get some money, and health-wise also they will get response from another their villagers, co-villagers. So I think that is the best thing. The only thing is that the prescription which we will be giving
for their development in housing sector, it should be a real prescription and it should be incorporated in such a way that their real problems are taken well care. Otherwise, it's not only for academic research that we are doing research. This is for the real research. We want action research for real development of that research. And I sir. know that you all are interested in that. So, with these words, if you have any more suggestions, anything you can say, you are free to say. Otherwise, I will just give thanks to the media people, print or electronic, and then we will close for the next. We will meet again in next. We are equally thankful to Professor Kavita Sharma ji that she has also made very meaningful presentation and hope that in our next program she will be there because the tribal women are very hesitant. They do not want to come out with their problems, the real problem. That she has that much of knowledge and she has a mind. She's trying to